Hello, everybody. My name is Samra Azhar. I'm from The Gateway. And today we bring an exclusive interview with a hybrid health coach, Urooba Azhar. She happens to be my sister. And this is going to be a very short and crispy session. I'm going to have I'm going to ask her a couple of questions. She's going to answer those, and I am going to record it. And later on, this video will be uploaded for your um, reach. So I'm going to immediately move on to the question series of questions. And for the sake of our audience, Urooba, may I request you to please use both mediums of language, both English and Urdu. So, Yes, yes. so yeah, everybody is able to understand us. And I'm extremely sorry for the background noise. We're unable to get a hold of that. It's some kind of construction happening. So we need to kind of live with it. I'll move ahead. Okay. I have a series of 5 questions actually. Ruba, please tell us something about yourself and what motivated you to become a health coach. Hi, Samra, and everybody who's going to tune in and listen to it even afterwards. मेरा नाम उरूबा है और मैं हेल्थ कोच हूँ पिछले 6-7 साल से और पहले मैंने जो शुरू किया था वो अपने आप से ही शुरू किया था. Usually I would when I would work out I would do it for my pain management. जो मैंने स्टार्ट किया था वो बहुत ज़्यादा लाइट वर्कआउट से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं जब रूमेटाइड आर्थराइटिस मुझे हुआ था तो मैं बिल्कुल ही बेड रिडन हो गई थी तकरीबन 2 साल तक. मुझसे बिस्तर से निकला नहीं जाता था. बिस्तर से उठने के लिए मुझे ज़मीन पे पहले तकिया रखना पड़ता था, फिर अपने पाँव रखने पड़ते थे उसके ऊपर क्योंकि मेरे पाँवों में दर्द होता था ज़मीन पे पाँव रखते हुए. तो काफ़ी ज़्यादा पेन था जब मेरा आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ था. तो उसके लिए मैंने बहुत लाइट तरीन स्ट्रेचेस से मुझे आराम मिलना शुरू हुआ था. जब मेरा पेन थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू हुआ मेडिसिन यूज़ करने के बाद, तो मैंने लाइट स्ट्रेचेस से स्टार्ट किया था वर्कआउट. उसी अरसे के अंदर जो है मेरा थोड़ा सा वेट ऊपर होना शुरू हो गया था. आई वाज स्किनी फैट. वेट ऊपर होना तो फिर गलत बात है बट बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होना शुरू हो गई थी. सो आई वुड अपीयर स्किनी बट आई वाज आल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट इन माय बॉडी विच इज़ कॉल्ड स्किनी फैट. जिसमें स्किनी लोग जो होते हैं वो लगते स्किनी है लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन में फ़ैट जमा हो जाता है ज़्यादा. तो उसकी वजह से भी फिर मैंने खाने पीने में थोड़ी बहुत एहतियात बरतना शुरू की. तो वहाँ से होते होते मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने जब देखा विटनेस किया ये सारा कुछ तो they would start asking questions. Some friends and family would say that hey, this is a apparently this is a great profession. ये अच्छा प्रोफेशन है. इस तरह से और फिर ऑनलाइन आई वुड लिसन टू पॉडकास्ट कोचेस वगैरह की. तो फिर वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया कि ये भी एक प्रोफेशन है. इसको आप प्रोफेशनली कर सकते हैं. आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से, पेन मैनेजमेंट से. कुछ लोग जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ लोगों की ये काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है अपनी फिटनेस रेजिमेंट से. तो दैट्स आल्सो समथिंग दैट यू लर्न एंड इट्स ट्रू. साइकोलॉजिकली आप काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं. अगर आपका कोई एक रूटीन काम कर रहा होता है आपके लिए तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाते हैं कि यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट रूटीन एंड यू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली. once you realize its benefits and once you realize कि इसका मेरी इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी कितना अच्छा असरअंदाज हो रहा है. सो इस वजह से भी जो है वो जो मेरी प्रोक्लिविटी थी वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गई. So I started getting requests from clients, milna julna, interaction, socializing, going to different gyms, going to people's homes. वहाँ से क्लाइंट्स से बात बूट कैम्प्स. वहाँ से क्लाइंट्स ने अपनी फ्रेंड्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया. फ्रेंड्स ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमारी बैक में पेन है, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें न्यूट्रिशन की समझ में नहीं आ रही है, हम किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करें. सो इस तरह से होते होते थ्रू दीज चैनल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस
ये जो है वो ग्रो होता चला गया था। मेरा जो पर्सनल एक पैशन था वो पब्लिक के लिए बनना शुरू हो गया था उसके बाद से। Oh, यस समरा। yeah, thank you. Amazing. So basically, what you said is you had some medical condition which really caused you to be in bed for two years, if I did get that right. Yes, And it started 9 years ago, the medical condition, yes, and it's a chronic illness. So it exists in the body all the time, and you can just you're relying on your immune system, and it kind of destroys your immune systems. Your immune system starts to get attacking healthy cells, so it goes into autopilot. That's why it's called autoimmune disease. yeah, And it's a and you when you eat those NSAIDs medicines, those are immunosuppressant medicines, so they weaken your immune system in a way, because they're shutting down its sort of whatever that immune system is doing, because it's basically it's attacking healthy cells in your body. yeah. And that's why, yeah, that's why they kind of, so to say that I had a disease, I still have it. It's just quiet right now. Okay, And okay. yeah. So you were basically able to suppress it in a way that it's not quite active. However, it exists. Yeah, it's because of the medicines. They give you what I was put on was chemo medicines. So their effect was the same as the chemo. They kind of ruined my hair, skin, and Uh, nails and everything. Yeah. So those medicines suppress the such a drastic activity of immune system, so that it stops attacking your healthy body cells. And then afterwards with chronic pain, so अगर कोई chronic pain का patient यहाँ पे सुन रहा है या सुनेगा eventually, तो chronic pain में ये है कि उसकी episodes होती हैं। उसके लिए एक थ्योरी भी कहलाती है स्पून थ्योरी, और उस थ्योरी के तहत जो chronic pain के लोग होते हैं वो स्पूनीज कहलाते हैं। कम्युनिटी है ये स्पूनीज की। उस स्पून थ्योरी के मुताबिक जो है, जब आप chronic pain के मरीज़ होते हैं तो सम डेज आपके पास ज़्यादा स्पून होते हैं, चमचे ज़्यादा चमचे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चमचे हैं, 12 चमचे हैं। आप सो के जब उठते हैं तो आप कहते हैं ओके, एक चमचा मैं यूज़ करूँगी नहाने के लिए, एक चमचा मैं यूज़ करूँगी दांत ब्रश करने के लिए, एक चमचा मैं यूज़ करूँगी ऑफिस जाने के लिए, एक चमचा मैं यूज़ करूँगी उसके लिए किसी भी और काम के लिए। सो 15 अगर आपके पास चमचे हैं तो 15 आपने जो है टास्क असाइन कर देने टू ईच स्पून। कुछ दिन जब आप उठते हैं तो आपके पास सिर्फ 6 चमचे होते हैं, वो दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। उसके अंदर आपको प्रायोरिटी असाइन करनी होती है अपने टास्क को, कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं। अपनी अपेयरेंस के बाद आपने अगर उसी दिन ऑफिस जाना है तो फिर ऑब्वियसली आपको एक ऐसे हुलिये में ऑफिस जाना है कि आपको इतना सोशलाइज करना है अपने लोगों के साथ। तो आपको उसमें से कुछ स्किप करना पड़ता है अपने टास्क में से। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपका पेन जो है लेवल थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है पेन का। So this is what it's like to live a chronic life. Eventually some days, yes, you won't be able to work out if you are a chronic patient of chronic illness, but then if you don't have anything like that, then there could be other reasons as well, not just chronic pain. Back to you, Samra. right, right. Okay, thank you. Yeah, thank you for such a detailed answer, and also revealing your medical condition, which was actually your motivation towards this career. So thank you Yeah. very much. I'm with that. I'm going to move to the next question. And meanwhile, can I request you to bring the mic closer, because we tend to lose you in the middle sometimes. Okay. Yeah, that's beautiful. All right. All right. So yeah, my next question to you is, what do you do as a health coach? Because we know what personal trainers do, and we know what gym trainers do, and we know what, like my other sister, what yoginis do. What is a health coach, Urooba? All right. So that's a great question. Yeah. Um, a health coach tends to
become a little bit more involved in your daily life. And I'm not going to use the word micromanagement, it doesn't work that way. But yes, we do help people in learning how they can maybe assign certain tasks for themselves, make those decisions themselves, make so the communication happens in a way where we motivate a person, we work with them to provide external motivation, and we also encourage them to work on intrinsic motivation, meaning internal motivation. And there's a lot of communication that happens as a health coach. So जिस तरह से मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ अपने करियर को, उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वाइटल होता है उसमें, बजाय इसके कि so this is a client centered program. What I give my clients is not a coach centered program. It doesn't say कि आपने जो है वो ये चीज़ें खानी है, इसके अलावा आप नहीं खा सकते. It can also what it includes is that if a client says I love brownies, so we think about where we can put a brownie for them, and we make sure कि वो इस तरह से नहीं डाल रहे कि ठीक है आपने इतना सख्त वर्कआउट किया ये आपका reward है. No, we don't use food as a reward, or use brownies as a reward. We use them as a food item, as something that yeah you can enjoy it, it tastes good, and we learn how we can use it in a way that it benefits you, that it fits into your life, and that it complements your health, rather than use it as a just a reward, and then if it's not a reward then it's bad. No, no food is bad. It's a blessing that you have, that you are able to eat something. It's a blessing. So we look at things in a different way, and we completely change the hardcore regimented way that people sometimes might follow, the fitness routine, a nutrition routine. So not in a hard way. That's why it's more like a lifestyle, a choice, a path that's more accurate. कि ये एक रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं, और आप गलती भी करें उससे गलती से सीखेंगे. So गलतियों पे, like you don't say okay this is a failure, I'm never ever going to be this, I'm never ever going to reach this goal, I won't be fit like this actor or actress. No, it's a path, and it's about your body. And yeah, it's all right that if you fail, that you can definitely learn from that mistake, and you're allowed these mistakes, not just one or two mistakes. You're allowed to make as many as you can, as you make along the path. So that's what it's pretty involved. As a health coach, it's a um, pretty involved program for both the client and for both the coach. Yes, Samra. Yeah. Okay. Thank you very much. So what I got from this is that's not one is not giving you the control of their life. Instead, it's a win-win situation where you're getting the results by telling your client how to eat instead of what to eat. Is that correct? Yes, that's pretty much it. Okay. Yes. Okay, I'm gonna move to my next question because there are three more left and we have our time constraints. So I'll make it really quick. Yeah, so this I used to think a lot. I still do. I think this a lot, and it I really don't know which one is more important. वज़ायत ज़्यादा ज़रूरी है या exercise करना ज़्यादा ज़रूरी है, or how it goes. If you could please shed some light, Urooba. Yeah, definitely. Can you hear me clearly? Yeah, if you could bring it a bit closer. How about now? Yeah, lovely, Crystal. Let's keep it this way. Okay. Yes, that's a great question. So they both go hand in hand. Sometimes, yeah, they both go hand in hand. There's also a lot of dichotomy
डिवाइड है अभी भी काफ़ी ज़्यादा, अभी भी नहीं मतलब हमेशा से हमेशा रहेगा। कल्ट्स हैं डिफरेंट जो कि कुछ कुछ सपोर्ट करेंगे न्यूट्रिशन को, कुछ सपोर्ट करेंगे एक्सरसाइज को, बट दोनों चीज़ें एक साथ चलनी हैं। अगर आपने किसी दिन उठ के डिसाइड किया कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है तो दोनों चीज़ें साथ में जाती हैं। न्यूट्रिशन का ये है कि अगर आप जो है वो बहुत अच्छी से एक्सरसाइज करते हैं, आपने जिम भी ज्वाइन कर लिया है, आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, आप कार्डियो भी करते हैं, बट इफ़ यू आर हैविंग मोर कैलोरीज देन योर बॉडी नीड्स, अगर आपने ज़्यादा, जब आप जहाज़ के अंदर फ्यूल डालते हैं तो जब कभी कुछ एक्सीडेंट्स होता है, फ्यूल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, टारमैक पे बहना शुरू हो जाता है। सो वो तो मशीन है, उसमें जितनी स्पेस है वो उसमें उतना फ्यूल आएगा, और उसके बाद जो होगा वो ज़ाहिर निकल के उबल के गिरना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में इस तरह से होता है कि जब आप फ्यूल एक्स्ट्रा ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो फैट सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में लाइक एक जाली टाइप है, और उसके अंदर फैट सेल्स जो हैं वो फिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्यूलाइट की भी अपीयरेंस आती है। सेल्यूलाइट इज़ नॉट समथिंग बैड, एवरीबॉडी हैज़ इट। लेकिन एक आसान सा ये है कि देखने का तरीका ये है कि जैसे सेल्यूलाइट की जो अपीयरेंस आती है, लोग कहते हैं कि व्हाई डू वी हैव दिस, तो उसका स्टोर होने का एक तरीका ये भी है। बट एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट जब एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में चली जाती हैं, इवन दो आपका एक्सरसाइज और वर्कआउट रेजिमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जा रही हैं, तो वो फैट सेल्स बन के स्टोर हो जाएंगी। अगर आपके गोल्स ये हैं कि आपकी फ़ैट परसेंटेज जो है वो 30 से नीचे आ जाए, 24 हो जाए, और इवन 12 हो जाए, स्पीकिंग ऑफ मोर एथलेटिक गोल्स, सो उसके हिसाब से फिर आपको अपनी कैलोरी लेनी होगी और कैलोरी डेफिसिट पे जाना होगा। फिर आपने प्रायोरिटी देनी होगी कि कैलोरी किस चीज़ पे किस चीज़ से हासिल करें। तो जितना आपके एथलेटिक होता चला जाएगा रेजिमेंट, और जितने आपके गोल्स जो है वो इम्पोर्टेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई जो है वो मैराथन रनर है, तो वो उसी तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उन्हीं चीज़ों से, मीनिंग वो अपनी डाइट के अंदर अच्छे से अच्छा प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो मेरी रेस में मुझे काम करेंगे। वो कार्ब लोडिंग करेगा, अच्छे कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के, ताकि वो देर से ब्रेक डाउन हो उसकी बॉडी में, तो वो ज़्यादा अरसे तक उसको फ्यूल के तौर पर यूज़ करे, उसकी जो रेस है 2 से 3 से 5 घंटे की। सो जितना आपके एथलेटिक गोल्स होते जाएंगे, उतना आपको न्यूट्रिशन की समझ में आना शुरू हो जाएगी, उतनी आप जो है वो इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। सो बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड इवन अगर आप जनरल पॉपुलेशन में हैं मौजूद, इवन अगर आप जो है वो इतने ज़्यादा कोई एथलेटिक गोल्स नहीं रखते, आपकी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, तो उसमें भी both go hand in hand. You can't say कि I will exercise and I'm going to lose weight, or you can't say that मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे वो करूँगी, अपना इम्पोर्टेंस दूँगी, फोकस करूँगी, but that's not going to help a lot, because आपका वेट वगैरह भी नीचे आ सकता है, आप उस गोल्स में जा सकते हैं, लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन, अगर आपको कोई ख़ास बॉडी कॉम्पोजिशन है, आपका कोई ख़ास गोल है, उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और लॉन्जेविटी के लिए, मीनिंग जो एजिज्म, व्हेन वी आर एजिंग, सो उसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। सो फॉर लॉन्जेविटी बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड फॉर इवन फॉर एथलेटिक एंड इम्पॉर्टेंट गोल्स बोथ गो हैंड इन हैंड। So we need to be keep a balance, if I got that right. Yes, but some days it's going to be so. In order to be realistic, balance gets a bit tricky. If you're a busy mom, balance could be really tricky. Yeah, So yes, so for busy moms, balance could be a triggering word. For busy moms, they would say I'm unable to keep a balance. It's yeah. almost impossible for me.
Why does this coach demand balance from me? So it could trigger it could be triggering to them. So yeah, so what we can use, the term is do your best. जो एक दिन में एक दिन के गोल के अंदर जितना आप कर सकते हैं उतना करें. Then next day, focus on the next day. So focus on your present Okay. and make smart goals. Yeah, whatever you can achieve, right? Not do not be very hard on yourself is what you are saying. Which leads to my next question. Um, me as a person, मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती जो मैंने यहाँ लिखा है. My favorite Okay. food or anybody else's is at any given day, at any given time, it's fast food. Okay. Um, I cannot give it up, and I have a very strict schedule. Me being me, I cannot give fast food up. It is easy to consume, and I have a schedule where I have to sit at most of the times. So what do I do? Right. So if I was your coach and you booked me, then I would say that you're already on the walking on the road where you want to look for change. That's why you booked a help. I didn't get Uh, it. I'm sorry. ओके सो अगर मैं आपकी कोच होती और आपने मेरी सेशंस बुक किए होते, Uh, राइट? कैन यू गेट मी? या सो आपने मेरे सेशंस बुक किए होते, आप कहते हैं मुझे 12 सेशंस हैं और मेरा ये सवाल है आपसे, तो मैं आपसे ये कहती कि आप जो है वो रुक नहीं सक रहे, लेकिन आपने मेरी हेल्प को बुक किया है क्योंकि आप उस राह पर ऑलरेडी चल रहे हैं जहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आप उससे बहुत दूर हैं. ठीक है, सो अगर आप एक कोच को बुक कर रहे हैं तो फिर आप ऑलरेडी उस रोड पर आ गए हैं, उस पाथ पर आ गए हैं कि जहाँ पर आप चेंज होना चाहते हैं. exactly. ओके. ओके. Yeah, that's why you are making a commitment, and that's why you're giving something very important. And it's not just money, it's also your time. So if you are looking for training, then yes, you are already on the path to change. Secondly, as I spoke earlier, that you asked me what a health coach is, and I said, okay, this is a bit more involved in my clients' lives. So when we work on a program, we make sure that we don't हम उसको ऐसे नहीं देखते कि आप जिंदगी में कभी भी इन चीज़ों को हाथ लगाना ही नहीं है. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइट मांगते हैं, आप कहते हैं मुझे दें डाइट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, सो उस चार्ट के साथ मे बी वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ McDonald's meal. We can say, no, this is not your reward, it's something that you just eat because it's food. Look at it as food. um, what we can also do is we can say, all right, we're not gonna have a jumbo mac, burger, whatever there's out there. I don't know the or name of the orders. um, whatever jumbo order there's out there, we're just going to have um, small fries, one chicken burger, and maybe a water bottle instead of a soda. You have your McDonald's with you. You're eating your favorite food and your favorite fries out there that are best in the world. And I also like McDonald's fries. And but kind of switched from soda to water. So congratulations. And then we can say, okay, you can bring your McDonald's food the next day, but also you're going to put your meal that you cooked at your home with it. You're going to put both things, both options on the table, but you're going to reach the first one, which is the meal that you cooked first, and then the McDonald's turn, and then it's McDonald's turn. So that's how. And then this is something that also not just includes your favorite things, but also something that will benefit you in the long run. It doesn't benefit me at all if you eat or don't eat vegetables. It benefits you, right? Yes, that's correct. So
Yeah, it benefits you. It doesn't benefit me if you stop or don't stop drinking alcohol. It benefits you. It doesn't benefit me if you stop or don't stop eating ice cream. It benefits you. So everything is that we're gonna put in that program is going to benefit you. Um, one way, one day, or maybe after 2 weeks. So 1 week you're having McDonald's with your meal. After 2, 3, 4 weeks, you're having a home cooked meal, something that you planned on the weekend. So that's also one thing that you do when you book a program, is that you book a certain time of your day that you dedicate to yourself, that you dedicate to your health. So हफ्ते का थोड़ा सा एक वक्त आपका अपना होता है, ठीक है, उसमें आपको टाइम निकालना होता है अपने लिए, जब आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं तो ये भी एक बेनिफिट है प्रोग्राम का कि उसमें प्रायोरिटी आ जाती है थोड़ी सी आपकी हेल्थ की तरफ. So these things help. So eventually जब आप ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे हैं. जो लेवल 2 और 3 है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके ट्रेड ऑफ्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत देखभाल के आपको चीज़ें खानी पड़ती हैं. तो इस वजह से ज़्यादातर लोग लेवल 1 में रहते हैं, जिसमें वो सोशलाइज भी कर सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, और अपनी कैलोरी के अंदर रहते हुए, जो उनकी टारगेटेड कैलोरी है उसके अंदर रहते हुए भी वो अपने फेवरेट फूड्स भी खा सकते हैं. बस उसमें ये करना होता है कि आपकी जो हफ्ते की कैलोरी है आपके उसके उसमें रहना है. सो हफ्ते की या डे की अगर आपकी, टू मेक थिंग्स ईजियर, डे की अगर आपकी 1400 कैलोरी है या 1200 कैलोरी है, तो अब आपने जो है कोई बहुत बड़ा बरीटो खा लिया, ब्रेकफास्ट बरीटो, जिसकी कैलोरी थी 7 to 800. सो अब आपके पास जितनी भी कैलोरी बचेगी आपने दिन में वो खाना है. ठीक है. सो उस कैलोरी के अंदर रहते हुए भी आप अपना फेवरेट फूड कंज्यूम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर within the limits of your calories, if you're maintaining your goals. But if you are cutting down from a certain weight class or a certain fat percentage, then you would have to be on a caloric deficit. Caloric deficit बहुत ज़्यादा थ्रो किया जाता है, word, term, phrase, caloric deficit. So उसका उसकी वजह ये होती है कि हम या तो आपका कोच या तो आपका वेट मेंटेन करना चाह रहा है, या आपकी कोई फैट परसेंटेज गिराना चाह रहा है, और आपकी जिम में परफॉर्मेंस अच्छी करना चाह रहा है. जिम का मतलब वो जगह जहाँ पर आप अपने जाकर अपनी बॉडी के ऊपर काम कर सकते हैं. So gym is not just, something for celebrity, some kind of advertisement. जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सीरियस काम हो रहा होता है. जब आप जिम के अंदर जाते हैं सीरियस गोल्स होते हैं, कोचेस बहुत बिजी होते हैं, उनको प्रोग्राम्स एक के बाद एक प्रोग्राम बनाना होता है, और उनको देखना होता है कि किस तरह से वो अपने क्लाइंट को गोल पे लेके जा रहे हैं या नहीं. सो सीरियस जॉब हो रही होती है gyms के अंदर. Not just not just loud music, not it's not just something that it has lights and loud music like a club. For coaches it's a place of work, and it's a place where people go for serious goals. So yes, you can have your favorite food. You don't have to be able to you don't have to use the word unable and stop. You don't have to stop. You shouldn't feel like you're unable to do something. You should always feel like you're able to do something. You should always feel Yeah, in control. So if you do eat your best stuff, your favorite food, your favorite stuff, but in control, that's right. then you're getting somewhere. Yeah, discipline. Yeah, but one of the most hard thing to maintain is discipline. Thank you very much. And the last question of today's topic, and I do see one of our participant has raised her hand. I'm going to allow a question from you, but if time allows, and because this was basically one-on-one between her and I. So if time allows, I'm going to request you to submit your question. Um, my next question is, I keep training, but I do not see any change. This came to my mind because I have people in my circle who keep
By training, I mean they do exercise and maintain discipline as well. However, the change is either very slow or there is no change at all. So what happens there, if you give us a brief, and because we're short of time, and we can move to our participant questions then. Okay, so this depends on your goals. Um, just to keep it brief, this has more to do with nutrition. Okay, the question that I'm seeing here has more to do with nutrition. So for example, I'll take one case study. Somebody wants to lose weight, okay, and they're not seeing any change, या वो चाह रहे हैं कि फैट परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाए बॉडी की. So ये एक केस स्टडी है, हज़ारों केस स्टडीज हैं, I'm just focusing on one. So यहाँ पर जो है वो कैलोरीज में थोड़ा सा मैसअप हो रहा है. ठीक है, आप जो है कैलोरी का सही से अपना टेबल नहीं बना पा रहे हैं, आप कैलोरीज को लॉग सही से नहीं कर रहे हैं. So that's the biggest hurdle when it comes to not being unable to see any change in the body. Calories को log सही से नहीं कर पा रहे हैं. Okay, so दूसरा ये कि I keep training. ट्रेनिंग का जिक्र किया है इन्होंने, तो इनका मतलब है कि ये कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं. एक्सरसाइज रेजिमेंट इन्होंने किया हुआ है. सो दे आर टेकिंग द स्टेप टूवर्ड चेंज. सो ट्रेनिंग के अंदर जो है वो अडाप्टेशन सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो सेम चीज़ों की हो रही है, और रेपिटेशन में जो है वो कोई से वेरिएबल्स ऐड नहीं हो रहे. मतलब या तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा वाला है और उसमें वर्कआउट बहुत आसान है, सो वर्कआउट की डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होनी चाहिए, या तो वेट्स चेंज होने चाहिए, या रेजिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, या डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, टाइम चेंज होना चाहिए. ये तमाम जो छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं वो वर्कआउट की इंटेंसिटी को डिसाइड करते हैं, और फिर उसी तरह का चेंज आपकी बॉडी में लेकर आते हैं. So going back to our question, which is question number 3, is nutrition more important than exercise? ये दोनों question जो है वो जो है थोड़े थोड़े एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, कि या तो उन्होंने न्यूट्रिशन के अंदर जो है लॉग सही से नहीं की हुई अपनी कैलोरी, या फिर ट्रेनिंग की इंटेंसिटी के अंदर वेरिएबल सही से नहीं देखे. ऑलराइट, समरा. Yes, thank you very much. Thank you for answering our questions. So, to summarize, you came to this. You started working on your career as a health coach after your medical ailment, which is arthritis, if I'm not wrong. And then, oh, sorry, there was an entrance. So, and then after giving that introduction, you started off around 8 years before, and then you became a health coach. And a health coach is somebody who gives you a guidance or a regime where you can keep discipline between nutrition and exercise, and one doesn't have to stop their favorite food. They need to bring it into some sort of limits, as advised by a health coach. And the reason people do not see any change after training is probably because there's some sort of imbalance between these two variables, exercise and nutrition. So we thank you very much. We've got the gist of it, and thank you very much for your time. Since we are very short on time, I'm going to display this for everybody's sake. We have 10 participants. Please find her on Facebook. This is what her profile looks like, and she's a very renowned health coach and will give you advices. Do take trainings from her. I'm going to now move on to our participants. If you have any questions, please shoot. I believe Ms. Fazila has had a question. If she's still with us, let me check. Yeah, Fazila, please, you had a question.
यस मैम, बस यही जब इस बारे में बात हो रही थी कि आप अपना फेवरेट फूड जो है नहीं छोड़ सकते, तो मैं ब्रेकफास्ट में एक ऐसी चीज़ है जो पराठा ऐसी चीज़ है जो मैं छोड़ नहीं सकती, और मुझे ये पता है कि पराठा खाने से वेट जो है बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता है, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती। तो वो मैं पूछना चाहती हूँ अरूबा से कि वो उसका ऑल्टरनेट क्या है, ऐसी क्या चीज़ दी जाए कि वो आपकी उस चीज़ को पूरा कर सके। प्लस वो मदर फीड जो मतलब अपने बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर आप ये चीजें छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये मुझे पूछना है। So, Urooba, if you can summarize, Fazaila's Can you question is if she is able to give up on parathas, and I, from our discussion earlier, I understand that she doesn't have to, but if you don't mind giving her an answer, please. right? So Mike? speaking of speaking of paratha, and speaking of things that we eat in our desi desi culture, there's nothing wrong with paratha. There's nothing. So paratha is not the enemy here कि पराठा से जो है वो वेट गेन हो जाएगा या जो भी है. सो पराठा रफली स्पीकिंग एक पराठे में कितनी कैलोरी हो जाती होगी? मे बी 130 140 मे बी. वो पराठा क्या होगा, आटा है उसमें उसमें घी. अच्छा, ये भी देखना है कि घी भर के बनाया है पराठा. अगर उसमें बहुत लेयर्स हैं तो उसका ये मतलब है कि वो घी भर के पराठा बना हुआ है. तो घी जो है उसके अंदर भी कैलोरी, बिकॉज ये फैट है. ठीक है, फैट 1 ग्राम फैट के अंदर 9 तो कैलोरी है. मैं देसी घी यूज करती हूँ पराठा में, और 2 टेबल स्पून यूज करती हूँ। ऑलराइट, सो 2 टेबलस्पून से हटाकर आपने अगर आप उसको सिर्फ 2 टेबलस्पून सेकने के लिए यूज़ करती हैं, सो आपने उसको 1 टेबलस्पून करना है. और पराठे को जो है उसके अंदर घी भर के नहीं बनाना है. पराठे को सिर्फ आपने हो सके तो उसमें थोड़ा सा चक्की का आटा मिलाना है. सो पराठा इज़ नॉट योर एनिमी. ठीक है, पराठे को आपने जिस चीज़ के साथ रखना है, चाय के साथ रख रहे हैं या किसी सालन के साथ रख रहे हैं, चार के साथ, अंडे के साथ, जैसे भी है. सो वो पूरा होल ब्रेकफास्ट जो है आपका कितना 300-400 कैलोरीज हो ही जाते होंगे. ठीक है, सो उसके बाद आपने देखना है कि आप दिन में और क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने खाने के अंदर. बिटवीन मील्स आपने स्नैक्स कितनी कैलोरी के लिए हैं, लंच के दरमियान, डिनर के दरमियान कितनी कैलोरी के स्नैक्स लिए हैं. सो कितने हैवी स्नैक्स लिए हैं, चिप्स खा लिया, डोनट खा लिया, क्या लिया है. सो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, सिर्फ पराठा नोट नहीं करना. सो उन सारी चीज़ों से आपको भी हेल्प मिलेगी, और आप अगर कोई किसी कोच के पास आप जा रहे हैं उसको भी हेल्प मिलेगी कि मॉनिटर कर सकें कि दिन में आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, ताकि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग, वन फूड आइटम, आप सारे फूड आइटम्स को रख सकें और देख सकें कि आपने कहाँ कहाँ चेंजेस लेके आने हैं. सो मे बी अगर हो सकेगा तो हम पराठे को भी इंक्लूड कर सकते हैं कुछ हफ्ते के कुछ दिनों में. ठीक है, और वैरायटी डाल सकते हैं आपके हफ्ते के कुछ दिनों में, कि ताकि आप उस हफ्ते की जो कैलोरीज हैं उनसे हटकर आगे ना बढ़ सकें, और उस कैलोरीज के अंदर रहते हुए भी अपनी फेवरेट चीज़ें भी आपके उसमें मेन्यू में शामिल हो सके. ठीक है, सो एंटायर मेन्यू, नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ योर डे that you need to focus on to make for it to make sense. जी, Samra. Okay, thank you very much. And we are very short on our meeting time. It's going to go off automatically. So since we do not have any other questions, Fazala. Yes, please. Oh, thank you very much, Fazala, for your earlier question. There's another. We have 4 minutes left. Fazala, please. Do you have a question, Fazala? No, I have no question. All right, no, that's okay. Thank you very much. We're going to wind it up here. Thank you very much. Thank you everybody for attending. Thank you very much for your question, Fazila. Hina, Suhail seemed to have another question. Can we take that question, Urooba, please? Yes, Hina. I don't exactly have a question, but Yes. I would like to thank Urooba for such
the brilliant way she explained everything. Thank you very much. And I have some of my students also are here in this meeting, and I think they will find it very educative too. And I'd like to ask my student to please give their feedbacks also. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Sidra. Thank you very much, Hina. Yeah, And Assalamualaikum. Alaikum. Thank you. Assalamualaikum, Sidra Tahir here, and I'm student of HINA. It was informative, but I joined it very, very late. So can you tell me where I can find the recording? Oh yeah, there is a recording. We will be uploading it shortly on our YouTube channel, and All I right. will be sharing the link with Hina and definitely with you. We will All post right. it Thank you. everywhere. Don't worry. Thank you very much. Thank you so much. It was great joining you. Thank you. Lovely, lovely, lovely to have all of you. Thank you. Thank you, Urooba. Thank you, everybody. See you the next time. We're going to come back with more people from industry. These were some industry secrets she revealed, and this is going to help you and will continue to help everybody. Thank you very much. Do leave us your feedback on the page, which is displayed, the link Facebook page, which is displayed below, and follow Urooba. Thank you. Bye-bye now. thank you.